Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you a new topic, factitive verbs. So let's start the video. But if you are new to my channel, don't forget to subscribe and press the bell icon. So let's start the topic, factitive verbs. First of all, know what the factitive verb is. A factitive verb is a form of transitive verb that takes both an object and object complement, the two of which are used in apposition. फैक्टिटिव वर्ब एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनके साथ हम एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं और एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं. इन दोनों को ही अपोजिशन में रखा जाता है. गाइस, जैसे कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है. मीन्स वो वर्ब्स जिनके साथ हम एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, वो वर्ब्स जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करने पर उन वर्ब का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है, उन वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं. फैक्टिटिव वर्ब भी एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं क्योंकि इनके साथ भी हम एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, लेकिन इनके साथ हम ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को भी यूज़ करते हैं. नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट? And second, what is an objective complement? An object is a noun or pronoun that receive the action of a transitive verb. Object वो noun या pronoun होता है जो transitive verb के action को receive करता है. Means verb का एक्शन का इफेक्ट जिस वर्ड पर पड़ता है, एक्शन का इफेक्ट जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है, उस वर्ड को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. इसको हम वर्ब के बाद यूज़ करते हैं. अ वर्ड और अ फ्रेज विच फॉलोज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिनेम और डिस्क्राइब इट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. वो वर्ड या फ्रेज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिनेम करता है, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के विषय में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, उस वर्ड को, उस फ्रेज को हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. एज अ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वी यूज नाउन और अ नाउन फ्रेज, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज. द मोस्ट कॉमन फैक्टिटिव वर्ब्स आर अपॉइंट, कॉल, चूज, कंसिडर, elect, find, make, think, name, select, etc. Now let us focus on some examples based on the factitive verbs. Here are some examples of factitive verbs used in sentences. The first verb is appoint. The school appointed him principal. Here the school which is a noun is the subject of the sentence. Appointed, which is the past form of the verb appoint, is a verb here. Him, which is a pronoun, is an object here. The word principal, which is a noun, is an objective complement here. The word principal is used for an object, is used to describe an object, is used to rename an object. So it is an objective complement here. Now let us focus on the next verb, call. Jack called his cousin a liar. Here, Jack, which is a name of a person, which is a noun, is the subject of the sentence. Called, which is the past form of the verb call, is a verb here. His cousin is an object here. A liar. Liar, which is a noun, is an objective complement here. A liar word is used for an object, is used to describe an object, is used to rename an object. So it is an objective complement. The next verb is choose. The team chose him their leader. Here the team which is a noun is the subject of the sentence. Chose, which is the past form of the verb choose, is a verb here. Him, which is a pronoun, is an object here. Their leader is an objective complement here. Their leader is used for an object, is used to describe an object, so it is an objective complement here. The next verb is leave. I left my work incomplete. Here I, which is a pronoun,
is the subject of the sentence. Left, which is the past form of the verb leave, is a verb here. My verb is an object here. Incomplete, the word incomplete, which is an adjective, is an objective complement here because this adjective is used for an object, is used to describe an object. So it is an objective complement here. The next verb is consider. We consider him honest. Here, we, which is a pronoun, is the subject of the sentence. Consider is a verb here. Him, which is a pronoun, is an object here. Honest, which is an adjective, is used for an object, is used to describe an object. So it is an objective complement here. The next verb is find. The judge found him guilty. Here, the judge which is a noun, is the subject of the sentence. Found, which is the past form of the verb find, is a verb here. Him, which is a pronoun, is an object here. Guilty. The word guilty, which is an adjective, is used for an object, is used to describe an object. So it is an objective complement here. The next verb is make. The emperor made him the governor. Here, the emperor, which is a noun, is the subject of the sentence. Made, which is the past form of the verb make, is a verb here. Him, which is a pronoun, is an object here. The governor, which is a noun, is an objective complement here. The word governor is used for an object, is used to describe an object, is used to rename an object. So it is an objective complement here. So guys, ये था फैक्टिटिव वर्ब्स पर आज का वीडियो कि फैक्टिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, वो कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनको हम फैक्टिटिव वर्ब्स कहते हैं। मीन्स वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनको अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की भी आवश्यकता होती है। आई होप गाइज कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।